Hello everyone, today we will discuss the third financial decision, that is dividend decision. In our previous videos, we have already discussed the first two financial decisions, that is investment and financing decision. Now we will discuss the third financial decision, that is dividend decision, in detail. Before knowing dividend decision, we must know the meaning of dividend. Dividend refers to that part of profit which the company distributed among its shareholder as a return of their investment. So वो पार्ट प्रॉफिट का जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर देती है अपने शेयर होल्डर्स में, उसे हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड. अब कंपनी सारा प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देती है शेयर होल्डर्स में, कुछ प्रॉफिट अपने फ्यूचर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस के लिए रखती है. तो जो पार्ट कंपनी अपने फ्यूचर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए रखती है उसे हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स. सो in dividend decision, the company has to decide how much part of the profit will be distributed among the shareholders and how much part will be retained in the business for funding its future growth prospects. देखिए यहाँ जैसे आपको बता रखा है कि कंपनी अपने रेवेन्यू और सेल्स में से अपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को कवर अप करती है. फिर जो बचता है, फिर वट एवर लेफ्ट इज नॉन एज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. If the company has taken any loan or has issued any debenture, then the company has to pay interest on that. That is deducted, and the left one is profit before tax. From this profit, the company paid the tax to the government. After that, whatever is left, that is profit after tax. And this is the divisible profit. This is known as divisible profit. Means the company has the option either to distribute the whole profit among the shareholders, either to retain it in the business, or either to retain some part in the business or to distribute some part as a dividend to shareholders. The financial manager has to be very careful while taking this decision, as retained earning is a easily available and the cheapest source of finance, and on the other hand the dividend decision also affect the market value of the share. So the financial manager has to maintain the balance between the cost of raising the excess finance and the market value of the shares also. So here the role of financial management increases. Now coming to the factors affecting dividend decision, first one is earnings of the company. As a company distributes dividend out of its current or previous year's earning or dividend equalization reserve, so it depends upon the earning of company whether it will distribute higher rate of dividend or lower rate of dividend. So if the earnings of the company are higher, then the company can distribute higher dividend, or if the earnings of the company is lower, then the company will distribute lower rate of dividend. Now coming to the second point, that is stability of earning. कंपनी की अर्निंग के पैटर्न पर या रेगुलरिटी ऑफ अर्निंग के पैटर्न पर डिपेंड करता है कि कंपनी ज़्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी या कम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी. अगर कंपनी की स्टेबल और रेगुलर अर्निंग है, मीन्स ईयर टू ईयर ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, तो कंपनी हायर रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है. बट अगर कंपनी की अर्निंग का पैटर्न स्टेबल नहीं है, मीन्स इरेगुलर है, दैट इज़ कि एक साल कम हो जाता है, अगले साल बढ़ जाता है, दैट इज़ नॉट रेगुलर पैटर्न इन अर्निंग, देन द कंपनी मस्ट डिस्ट्रीब्यूट लोअर रेट ऑफ डिविडेंड. क्योंकि अगर आप जिस साल अर्निंग ज़्यादा है, ज़्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं नेक्स्ट ईयर भी एक्सपेक्ट करेंगे कि कंपनी उनको उतना डिविडेंड या उससे ज़्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करे. सो in case of excess earning or in the year of more earnings, then that company whose earnings are unstable, वो कंपनी जो है अपने
एक्सेस प्रॉफिट्स को एक रिजर्व में रख सकती है या रिटेन करके रख सकती है, ताकि फ्यूचर में जब उनके प्रॉफिट कम हो तो वहाँ से कंपनी के शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर पाए. Now coming to the third point, that is stability of dividend. कंपनीज जनरली स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी अडॉप्ट करती है. स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी का मतलब है कंपनी ईयर टू ईयर अपना डिविडेंड पर शेयर कम नहीं करती है, आइदर इट विल रिमेन सेम और इट विल इंक्रीज. Because those companies which are following stable dividend policy, they have more reputation in the share market. और जनरली इन्वेस्टर्स भी उसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी अडॉप्ट करती है. Now coming to the fourth point, that is growth prospects. As we have just discussed, the financial manager has to decide how much part of the profit will be distributed among the shareholders as dividend and how much part of the profit will be retained in the business as retained earning. So, जिन कंपनीज के पास ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं या जिनके पास नए नए इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं विच आर वेरी प्रॉफिटेबल, दे कैन रिटेन मोर पार्ट ऑफ द प्रॉफिट एज रिटेन्ड अर्निंग एंड विल डिस्ट्रीब्यूट लेसर डिविडेंड. ऑन द अदर हैंड, अगर कोई कंपनी अपनी मैच्योरिटी स्टेज पर है या उसके पास ज़्यादा प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट प्लान्स नहीं हैं, देन दैट कंपनी विल डिस्ट्रीब्यूट more dividend and will retain lesser part of the profit as retained earning. Now coming to the fifth point, that is cash flow position. अगर कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी, दैट मीन्स द फंड्स और द कैश विल गो आउट ऑफ द बिजनेस. So, before taking dividend decision or before deciding how much dividend will be distributed, the financial manager has to ensure that there must be surplus cash in the business. Now coming to the sixth point, that is preference of shareholders. Preference of shareholders must also be kept in mind while taking dividend decision. For example, अगर किसी कंपनी की मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स रिटायर्ड, ओल्ड और मिडिल क्लास मैन हैं, देन दे वांट द कंपनी टू डिक्लेयर मोर और स्टेबल डिविडेंड. दे डोंट वांट द कंपनी टू रिटेन मोर पार्ट ऑफ द प्रॉफिट एज रिटेन्ड अर्निंग. ऑन द अदर हैंड, अगर कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्दी और रिच शेयर होल्डर्स हैं, देन द कंपनी कैन डिक्लेयर लो रेट ऑफ डिविडेंड as the shareholders prefer the company to retain more part of the profit as retained earning to fund its investment projects so that they can get the benefit of capital gains in future. Seventh point is taxation policy. Taxation policy must also be considered while taking dividend decision. If tax on dividend is higher, then the company will prefer to pay less dividend, or if tax on dividend is lesser, then the company can pay more dividend. Now coming to the eighth point, that is stock market reactions. Investors जनरली कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी के बेस पर कंपनी को इवेल्युएट करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए और किन में नहीं. अगर कंपनी ज़्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है तो ये इन्वेस्टर्स के माइंड में एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करता है एंड ऑल्सो गिव्स एन इंडिकेशन दैट द कंपनी इज़ अर्निंग हायर प्रॉफिट्स. That's why it is able to distribute more dividend, which in turn helps in increasing market share price also. On the other hand, if the company is distributing lower dividend as compared to its previous years, then it gives a negative image or it leaves a negative impression in the minds of investors. Ninth point is access to capital market. Reputed companies generally don't face
much difficulties in accessing capital market or raising funds from capital markets. So reputed companies can declare higher rate of dividend also, as they are less dependent on retained earning to finance its future growth plans. But if the company face difficulty in accessing capital market or raising funds from capital market, then the company should declare lower rate of dividend. Next point is legal constraints. The financial manager should also consider the various restrictions and legal constraints laid down by the Companies Act while declaring dividend. Coming to the next point, that is contractual constraints. जब कंपनीज लोन के थ्रू फंड्स रेज करती है देन लेंडर्स मे इम्पोज सर्टेन restrictions with regard to the payment of dividend. So these restrictions must also be adhered to while declaring dividend. That's all in today's video. Thanks for watching this video.